Hello and welcome to Absolute India News. I am Akriti Bagla, and today on Absolute India News, I have with me the very handsome Karanvir Sharma. Karanvir, hi, and how have you been? I've been good. How have you been, Akriti? I am very good, Karanvir. And Karanvir, first of all, I would start off by asking, Earth Thursday has received overwhelming response. So, did you thought कि इतना अच्छा response मिलेगा या were you nervous or skeptical? Uh, Honestly, when you work on a project, you wanted to work for everybody and for the project itself because वहाँ पे कितना टाइम आप बिताते हैं और आप डेफिनेटली जो काम करते हैं उसमें अगर थोड़ी अप्रिशिएशन हो तो अच्छा लगता है. And Pan India has been appreciated. In fact, it's one of the most viewed films on the OTT platform. So in that sense, I feel blessed. Mm, I, you know, some projects are very close to your heart. Like when I read the script of a Thursday, I always knew कि ऐसी कहानी बाहर आनी चाहिए. It's a thought provoking subject. और उसको अगर appreciation नहीं मिलेगी, then there's something wrong with this country. I feel, you know, Exactly. वो thought provoke नहीं कर पाएगी तो. So we are all very happy. What was your takeaway from the character? And like we see, Yami's character is very intense, and no doubt you are playing a lawyer. But when you still stay around that character, how was the vibe? The vibe was yeah, मुझे what I'll tell you. I mean, I feel there are two questions in one that I need to answer. First, that you said, what is your takeaway from the character? I think my takeaway is to be supportive of a woman who has a reason and cause, irrespective of what the outcome is. I think that's Mm. what a man truly is. And I respect such men. I would, and I am that kind of a man. And I would want to be this kind of a man even more after this film, because I think a true man, uh, is very proud of his woman, irrespective of whatever she's been through or what it is, and stands by her side. I think that's the mark of a true man. And if you ask me, your second question that I feel that you're asking me is that what do you feel about, you know, in general, I feel that this character as a criminal lawyer, it was very, very difficult to play because I think this was only difficult for a reason. And that reason is that it was shot in the pandemic. So additional pressure tha. ये हम एज एन आर्टिस्ट कहीं ना वो कर नहीं पाते थे. इट्स अ न्यू मीडियम. मास्किंग अप अगेन एंड अगेन, सैनिटाइजिंग बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, किसी की छींक आ गई तो दूर हो जाना वहां से. तो ये बहुत लाइक इट प्लेज अ बिग पार्ट, यू नो ऑन योर, जिससे एडेड अटेंशन आपको ये सारी चीजों को जो नहीं देनी चाहिए वो देनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट वी वर इन. ऑल्सो ये जो किरदार मैंने किया है, मैंने एट अ कपल ऑफ मंथ्स के गैप में किया है. मतलब मैंने 2 दिन या 3 दिन, एक महीने काम किया, फिर अगले महीने कुछ और किया, फिर अगले महीने 2-3 सीन और किए, फिर कुछ रीशूट किए. टू गेट दैट होल्ड ऑफ द कैरेक्टर एंड टू मेक इट लुक लाइक उसकी एक जर्नी है, वाज गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट व्हेन यू हैव दैट मच ऑफ अ ब्रेक. आप कुछ और शूट कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे आ रहे हैं. मुझे याद है शौर्य अनोखी का लास्ट दिन शूट था, एक शो जो मैंने किया था अराउंड दैट ईयर इटसेल्फ, लास्ट ईयर. तो आई वाज शूटिंग फॉर दैट शो बिकॉज इट वाज द लास्ट डे ऑफ दैट शो. इट वाज अ वाइंड अप ऑफ दैट शो. तो तो मैं कुछ 12-14 घंटे वहां शूट किया मैंने. तो उसके बाद पूरे कास्ट एंड क्रू के साथ हम लोग चिल कर रहे थे, वांटेड टू स्पेंड टाइम, और अगले दिन मुझे यहाँ पे आना था. तो आई स्लेप्ट अराउंड 4:30, गॉट अप एट 6:37, वेंट फॉर द शूट.
तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, यू हैव टू केटर टू एवरीथिंग, यू नो। कभी कभी मेरे साथ, बेहजाद के साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं नाइट शिफ्ट कहीं और कर रहा हूँ और डे शिफ्ट इनको दे रहा हूँ, या कुछ और ऐसा कर रहा Oh, हूँ, यू नो, अपना टाइम मैनेज कर रहा हूँ। तो so it's been a journey. It's been quite I think that's the perk of an artist, I think, you need to work with. and currently, I would like to tell on this note that you are privileged to be working because कहीं ना कहीं we have seen कि pandemic के बाद everything has been affected, and you are fortunate enough to get work back to back. But currently, also there was a time you weren't getting the kind of project maybe you looked for. So when you Hmm. recall that phase and you look at yourself now at this stage, what Hmm. thoughts do you get, or are you like happy with the kind your journey is going? I don't think I'm, first of all, privileged enough to be working. I don't think it is definitely has its perks, and it is a paid job, so that's why its privileges are there. But I think you're Mm, working only because somebody wants to work with you, or you want to work with somebody, and the opportunity meets, two ideologies meet, you know. So I think if you're if you're persistent enough, वो eventually आपको आता ही है। और दूसरा आपका जो आप जो कहना चाह रही हैं कि हाँ, इतना रोल नहीं आ रहा था, ये सारी चीजें नहीं आ रही थी, यहाँ पे ऐसा ही होता है। इस इंडस्ट्री का रूल ही ऐसा है कि वर्क गेट्स यू वर्क, इफ यू डू गुड वर्क, यू गेट बेटर वर्क। exactly. Sometimes you do good work, but it's not that big a success, then there is no point, because दैट्स हाउ इट इज, मुझे लगता है बेहजाद के साथ भी जब मैंने ब्लैंक में काम किया था, उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी, Mm. तो आई थिंक कुछ 2-2.5 साल पहले आई थी। तो it was a brilliant film. Even if you go ahead and watch it, you'll find him as a filmmaker very profound, you know। काफी अच्छा Mm. काम किया था बेहजाद ने उसमें उसमें भी। मगर उसका रीच उतना नहीं हो पाया, उतना उसको एक्लेज नहीं मिल पाए, या उसको उतनी वॉइस नहीं मिल पाई। तो the journey has to, वो वहां ही रह जाती है, it doesn't level up for you। तो एक ऐसा भी टाइम था स्टार्टिंग ऑफ द पैंडेमिक में, जो बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए। I lost a lot of friends in the industry, Major Bikramjeet, जो मेरे साथ सियासत में थे, we lost him to COVID। कुछ extended family में, कुछ aunties and so many things happened there, so it takes a toll on you, and at the same time मुझे opportunities भी नहीं आ रही थी। I was literally at home not doing anything। तब मैंने डिसाइड किया, यार, I cannot waste my time be feeling dejected or anything as such। And whenever I am not at a job, my job is to find a job, and my job is to nurture myself as an artist, watch good cinema, Mm. experience life at its fullest, be a better human every day। I think take, अपनी माँ बाप की सेवा करना थोड़ा बहुत, ये मुझे अच्छा लगता है। I think that's an artist's job, when you're not, you train, you learn a new musical instrument, you learn new ways of um, understanding cinema। I think that's how you keep going, and I think that's one of the reasons I've become a better performer। So currently, how do you go about choosing a project? Like, what parameters do you consider? It has to be a good role ना, मतलब आपको अच्छा लगे करने में। जैसे थर्सडे में, आई नो द रोल wasn't it was a good role, but because of the thought of Rohit Chandani and a coming of age character, बड़े रियल नहीं होते, जैसे जिसमें नो ड्रामा हो, नो, आई थिंक जस्ट वेरी रियल कैरेक्टर्स इज व्हाट आई रिलेट टू। क्योंकि रिलेटेबल कैरेक्टर्स जब तक आप नहीं करेंगे ना, तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी आपसे। अगर आप सुपर हीरो भी, अगर आप जितना भी देखें सुपर हीरो हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। उनके भी आपको कमियां वो हमेशा फिल्मों में दिखाई देती है, और वो ही कनेक्टिंग पॉइंट हो जाता है।
तो चाहे वो उनकी कोई खामी हो या उनकी कोई क्वालिटी हो, वो आगे आप जब दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वो एक यूनिकनेस लेके आता है. एंड आई थिंक दैट इज द यूएसपी ऑफ गेटिंग अ गुड कैरेक्टर. इट शुड बी फ्लॉड, इट शुड बी रियल, इट शुड बी लार्जर देन लाइफ, बट रिलेटेबल. तो आई थिंक ये सारी चीजें मुझे, that's what I consider as well, and that's my first like priority. Second obviously is मुझे अच्छे डायरेक्टर्स, लाइक माइंडेड डायरेक्टर्स के साथ काम करना पसंद है. जो न्यू एज डायरेक्टर्स है उनके साथ तो पसंद ही है, but that doesn't mean I don't want to work with the Sanjay Leela Bhansali. Obviously he's so magnificent, and many others like him. uh, my third, I think, if I have to choose, is a good platform or a good production. Your production wise, at least the film or whatever you're doing sees the light of the day. नहीं तो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप बना के घर पे बिठा के रख दो, उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो क्या फायदा उसका. तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर्स रोल आता है, तो जो बैंकेबल प्रोड्यूसर्स है. आई थिंक दिस इज अ कॉम्बिनेशन दैट आई लुक फॉरवर्ड टू. And since you just now spoke about platforms, currently you have done music videos as well. We saw you with Devatama recently. So do you think as an actor, medium really matters? And now OTT is also flourishing. So do you think it is giving enough opportunities, content wise, creativity wise? आई थिंक डेफिनेटली आई अपॉर्चुनिटीज है. मुझे एक बात बताइए, ये सवाल आप अपने सारे आर्टिस्ट को पूछती हैं, है ना, कि ओटीटी और Not ये सारी चीजें, कि नहीं, कि जिन लोगों ने ओटीटी में किया होता है शायद इसलिए आप पूछती हैं, है ना. no, not exactly, but yeah, obviously it is a medium flourishing. So फ्लोरिशिंग. I personally love to know the take of people on it. It's a different feeling. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ओटीटी फिल्म अ थर्सडे, ठीक है. बट जब इसकी स्क्रीनिंग हुई थी, बहुत सारे इंडस्ट्री वालों ने, बहुत सारे आउटसाइडर्स ने ये भी कहा था बड़े पर्दे पे देखकर, अ, कि ये बड़े पर्दे की फिल्म है. कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये ओटीटी के लिए ही सही है. यू नो सो सीइंग योरसेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, that theater experience where the audience is literally investing their time, their money and their efforts of coming to a theater and watching you is. मुझे याद है जिद के टाइम पे मैं तो थिएटर्स जाता था बकायदा. वो जिद के टाइम भूल जाइए, साडाडा के टाइम पे तो वो पिक्चर इतनी Mhm. छोटी पिक्चर थी कि मुझे बकायदा बूथ पे खड़े होके बोलना पड़ता है, सर आप ये पिक्चर देखिए. वो बोलते थे क्यों देखे, बोला सर क्योंकि मैं इसमें एक्टिंग कर रहा हूँ. बोलते कि बोलते कि फिर भी क्यों देखे, बोला नहीं देखोगे तो सर मैं आप देखिए, अगर मैं वेट करूंगा आपका, अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं आपको 50% वापस दूँ, आपके पैसे. बोला कि 50% क्यों देगा वापस, बोला कि 50% तो मेरा मान रखना पड़ेगा ना, मैं भी तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ टाइम इधर बूथ पे खड़े होके. so so I've had those experiences. Obviously, opportunities are much more now. On a serious note, they've always been there if you're really finding it, but the mediums are many more. अब देखिए ना, जैसे अभी आपके कुछ चुनिंदा 5-6 OTT platforms हैं. They have to churn out regular work. So that means they have to have that much more engaging content. That means that many more good artists, because Yeah. डिजिटल में क्या हो गया ना कि एनीवेयर एक्चुअली अगर अच्छा काम नहीं है ना, अभी आप देखिए म्यूजिक वीडियो में, अगर आपका म्यूजिक वीडियो अच्छा नहीं होता तो आपको उतने व्यूअरशिप नहीं आती, आपका म्यूजिक वीडियो ट्रेंड नहीं करता है. जैसे both of my, I think, music videos were trending on YouTube, Yeah. and that happens only because there is a reach, there's an audience, and there's an appreciation. Exactly. It has to be good work, um, uh, undoubtedly. So I think it's a good platform. The digital era is itself a good platform for good content and good makers. So I think that's opportunities are much more. And so, what about your upcoming projects? I'm doing another OTT web series. I think it's going to be one of the biggest web series for that platform, which I cannot name which one it is because I'm not allowed to.
but I can tell you that it is produced by Saregama, and it's called Invisible Woman. And we right now don't know who the Invisible Woman is or what it is. And Invisible Woman नाम ऐसा है कि ये मिस इंडिया या मिसेस इंडिया नहीं है, या जैसे मिस्टर इंडिया थी ना, वैसा नहीं है कि वो गायब हो जाती है बीच में, ऐसा कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है. इट्स अ थ्रिलर, आउट एंड आउट थ्रिलर, or maybe not, you know. But it's I'm playing a cop in there, in that. So that's something I'm really excited about. It's got a good ensemble cast as well, so really excited about that. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.